Hello everyone, this is Sneha and welcome to Green World Investor, a platform focusing on all personal finance needs for beginners. So today we are going to talk about Asian Paints. We are going to do a shared analysis of Asian Paints company, and in this video we will take a look at the different growth prospects of the company, the business model of the company, the income diversification, the pros and cons of the stocks, what are its future opportunities and what are its major risks. And at the end we will also take a look at the valuation and whether it makes sense for you to invest in this stock. So let's begin the video, but before starting let me just tell you that I am not a SEBI registered advisor. For all your investment needs you can consult a registered investor advisor. This video is only for educational purposes, and also all the links and the data source is either from the website or from screener.in as always. So let's start the video. So Asian Paints, could it possibly paint your portfolio red? So yeah, so let's take a look at the business model of Asian Paints. So Asian Paints, everybody knows about Asian Paints. We have all grown up with the paint smell in our noses. And so Asian Paints is the largest paint company in India with dominant market share positions, and this company came into being in 1942 and has been a market leader since 1967. कंपनी की बहुत हाई मार्केट शेयर है. अगर हम बात करें अपने डोमेस्टिक इंडियन मार्केट की, तो डेकोरेटिव सेगमेंट में कंपनी एंजॉयज अप टू 55 to 60% मार्केट शेयर, और अगर हम इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो इट्स अराउंड 15 to 20%. एंड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, about 80 to 85% of the Indian paint industry comprises of the decorative paints. Yes, now the company has come a long way from just being a vanilla paint company. जब शुरुआत में कंपनी ने एक पेंट कंपनी के जैसे शुरू किया था, but gradually over the years the company has diversified into a lot many ancillary businesses also, like the home improvement हो गया या हमारा home decor section हो गया. पेंट्स के अलावा भी कंपनी ने होम इम्प्रूवमेंट में काफ़ी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी हैज़ नाउ गॉट अ नाइस डाइवर्सिफिकेशन. ऑल्सो द कंपनी हैज़ मेजर मार्केट शेयर पोजिशन इन द इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स एज वेल. तो अगर हम बात करें इसकी रेवेन्यू composition की, so around 85% of the revenue is from the paint section alone, around 12% is from the international businesses, and 2% each is from the industrial as well as the home decor section. तो इस तरह से कंपनी की रेवेन्यूज डाइवर्सिफाइड है. अगर हम बात करें कंपनी के एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 12% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज, और कंपनी की प्रेजेंस भी ओवर 60 कंट्रीज में है. एंड कंपनी ऑल्सो हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन मोर देन 15 कंट्रीज in Middle East, Asia, South Pacific and Africa. So the company has around 26 manufacturing facilities worldwide, including 8 in India. और इंडिया में भी कंपनी का काफ़ी बड़ा एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पेंट सर्विसेज है, रिटेल स्टोर्स हैं. सो द कंपनी हैज़ अ ह्यूज डोमेस्टिक फुटप्रिंट इन इंडिया, and the company is also the 3rd largest paint company in Asia and the 9th largest coating companies in the world. तो कंपनी की जो अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफरिंग की, तो वो काफ़ी ह्यूज है. कंपनी ने ना ही सिर्फ पेंट्स में बल्कि वॉल कवरिंग्स है, अडेसिव्स है, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स है. तो इस तरह से होम डेकोर प्रोडक्ट्स है, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स है. तो काफ़ी कंपनी ने अभी अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग को वाइड कर दिया है. एंड द कंपनी ऑल्सो क्लेम्स टू हैव 45 प्रोडक्ट्स विच with no direct competitive product offering from its peers. So the company ने ये भी claim किया है कि उनके पास ऐसे 45 products हैं जो कि और peers की अभी product offering में नहीं है. So ये कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में आते हैं. एक तो कंपनी का ब्रांड नेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी कंपनी की लोकल जो नेटवर्क है और डोमेस्टिक फुटप्रिंट है काफ़ी लार्ज है, प्रोडक्ट ऑफरिंग काफ़ी अच्छी है. तो ये सारे हो गए हमारे कंपनी के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. Now, Asian Paints has been around since 1942.
So now with around 8 decades of experience and expertise, the company is now very well confident about the customer choices and preferences. So company ने over the years the company has launched products to meet the customer preferences and also the changing trends in the domestic as well as international market. अगर हम देखें तो कंपनी ने कोविड में सेफ पेंटिंग बोलकर अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था एंड इट क्लेम टू यूज पेंट्स दैट वाज सेफ ड्यूरिंग दोज टाइम्स. वो ही नहीं, पहले से भी कंपनी के काफ़ी एंटी बैक्टीरियल और एंटी एस्थोमेटिक पेंट्स हैं टू केटर टू कस्टमर्स इन दैट फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी. तो आप देखो कि the company is very well aware of the customer preferences and also wants to cater to its customer needs, which makes it also a customer preferred choice for customers. Customers भी ऐसी ही companies को prefer करते हैं जिनका एक brand reputation है और जिनके products पे customer ने वो एक अपनी trust या loyalty build की है, which is not easy to do it so companies like Asian Paints have become one of the customer darlings, if I can say. Also जो कंपनी का कस्टमर बेस है विच इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, नॉट ओनली इन द कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर्स बट ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल. जैसे कंपनी की ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस बहुत हाई है, इसके कोटिंग्स की कस्टमर बेस बहुत हाई है. सो इस तरह से कंपनी के इंडस्ट्रियल कंटेनर्स हो गए या फिर लाइट इंडस्ट्रियल कोटिंग्स हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गया. तो इनमें नाउ वी आर टेकिंग अ लुक एट द कस्टमर्स स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जिसमें हमने बात की उसके लार्ज फुटप्रिंट की, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस की एंड ह्यूज प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की. अगर हम बात करें इंटरनेशनली भी कंपनी की काफ़ी अच्छी होल्ड है, जिसमें उनके काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आर देयर वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो द कंपनी currently has a manufacturing capacity of 1.7 million kiloliters per annum. So now let's also see what are the other major advantages for the company. तो इंडिया की जो strong growth story है, that also acts as a strong tailwind for Asian Paints. The current paint industry is estimated around $8 billion in India and is one of the fastest growing industries in the country, and Asian Paint stands a good chance to benefit from this trend. Also after the COVID-19 pandemic, people have become more aware of the places they live in. उनको अपने घर को ब्यूटिफाई करना होता है and there is a trend to पहले जैसे because of increasing income levels and rising affluence, rising middle class sections of the society, पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो अब लोग काफ़ी अवेयर है अपने सराउंडिंग्स के लिए. So they want to live in a nice beautiful homes, and Asian Paint stands a very good chance to benefit from this trend. Also the company has been launching solutions and experiences to increase the overall holistic customer experience for their for the beautification of their homes. So company ने अभी काफ़ी expand कर लिया है bathrooms, kitchenware, decorative segments of the houses. तो इस तरह से company अपने इस segment को cater कर रही है. तो ये हो गया हमारे इंडियन ग्रोथ स्टोरी, और कंपनी ने भी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा दिखाया है. ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैव आल्सो बीन नाइस, अराउंड 14-15%. हालांकि जो क्वार्टर थर्ड था कंपनी का, उसमें उसकी वॉल्यूम ग्रोथ उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंपनी की कंपनी कैसे अपने फ्यूचर में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग इस पेंट इंडस्ट्री में अपने आप को इट कैन एस्टैब्लिश इटसेल्फ. सो एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर कि कंपनी की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज अराउंड 1.7 million kiloliters per annum. Now the company wants to increase its manufacturing capacity and is incurring capex of around 8,700 crores in this over 8,700 crores I must say in this section. So abhi company is trying to increase its capacity to around 2.6 million kiloliters per annum. और यही नहीं, the company is also backwardly integrating itself to produce a VAM, to introduce VAM technology, which is very important for manufacture of eco-friendly paints. Currently VAM की हमारे देश में कुछ production नहीं है, and most of it या 100% of it is being imported into India. तो इस पे कंपनी अभी ध्यान दे रही है, और it is also establishing a water based manufacturing
facility in India, and is also expanding its product horizon into beautiful homes, home decor. तो इस तरह से कंपनी अलग अलग जोन्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ताकि वो डोमेस्टिक मार्केट में अपनी फुटिंग को बरकरार रख सके। अब क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ रहा है, सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फॉर एशियन पेंट स्टॉक इज द राइजिंग कंपटीशन, नॉट ओनली नेशनल बट ऑल्सो रीजनल प्लेयर्स। अगर हम नेशनल प्लेयर्स की बात करें तो वी हैव कांसाई, नेरोलैक, वी हैव बर्जर पेंट्स, वी हैव एक्सको, नोबेल, इंडिगो पेंट्स। ये हो गए हमारे नेशनल कंपटीशन एशियन पेंट्स के। और अगर हम बात करें रीजनल प्लेयर्स की तो वो हो गए जैसे सिरका पेंट्स हो गया, कामधेनु पेंट्स। तो ये सारे हो गए कंपनी के रीजनल कंपटीशन। लेकिन कंपनी इंडिया में पेंट इंडस्ट्री हैज़ एन ऑलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर, यानी कि द मेजर market share is occupied by one. So Asian Paints command the majority market share, and बाकी जो है players they come under the next category. तो ये हो गया हमारे oligopolistic structure का। लेकिन अब इसमें और players आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे Grasim is making a huge aggressive plan to enter into the paints industry, which is one of the major setbacks for Asian Paints. हालांकि paints is the major focus for Asian Paints as of now, as we have discussed, around 85% of its revenue is from paints alone. तो बाकी इंडस्ट्रियल का काफ़ी अभी स्मॉलर वो है proportion in the overall revenue composition. तो या तो कंपनी उस पर फोकस करे, या फिर it has to further strengthen its foothold in the Indian domestic market because of the entry of huge players like the Grasim, which has the backing of Aditya Birla Group. तो ये हो गया नंबर 1 कंसर्न, इंक्रीजिंग कंपटीशन। इस पे हम एक बार फिर से आएंगे। वी विल डिस्कस हाउ ग्रासिम इज मेकिंग एन अग्रेसिव एंट्री इनटू द पेंट इंडस्ट्री, विच इज़ अ मेजर हेडेक फॉर एशियन पेंट्स। अगर हम बात करें उसके और प्रॉब्लम्स की, तो चैलेंजेस में नंबर 2 आते हैं इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। जैसे हमको सबको पता है कि क्रूड ऑयल इज़ द मेजर कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। तो ये कंपनी बहुत प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस से बहुत ऊपर नीचे होने के वजह से इसकी परफॉर्मेंस में भी इशू आ सकता है। जैसे FY22 में इन्फ्लेशन वाज सो हाई एंड सो द कंपनीज कॉस्ट हैड वेंट वेरी हाई। तो कंपनी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी रिसेंट कपल ऑफ मंथ्स में डिफ्लेशन के वजह से कंपनी का फ़ायदा भी हुआ है इस साइड में। लेकिन कंपनी कहती है कि बिकॉज इट एंजॉयज, इट हैज़ सच अ ह्यूज leadership in the Indian markets, it has been the market leader since 1967, so it stands a good chance to pass some of these price increases partly to its customers. लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक में ही, वो सिर्फ डेकोरेटिव सेगमेंट में ही पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल इन द इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो ये सेकंड हो गया कंपनी का मेजर जो इशू है, इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, विच इज़ अ मेजर हेडिंग। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट द कंपनी इज मेकिंग huge efforts on its environmental impacts in India, and it is trying to reduce its carbon footprint. And so third, अगर हम बात करें तो Asian Paints is currently mired with the changing landscape of the Indian paint industry. जैसे हमने पहले mention किया कि Grasim is making an entry into the Indian paint industry. Now Grasim has the backing of one of the oldest business conglomerates, Aditya Birla Group in India, and द कंपनी भी काफ़ी अग्रेसिवली इसमें एंटर करी। जैसे पहले कंपनी ने, ग्रासिम ने प्लान किया था टू इनकर अ केपेक्स ऑफ अराउंड 5,000 crores फॉर दिस पर्पस। अभी लेकिन उन्होंने अपने प्लान को डबल कर दिया है, एंड इट इज़ प्लानिंग अ केपेक्स ऑफ अराउंड 10,000 crores इन दिस सेक्शन। ऑल्सो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो ग्रासिम इज एमिंग टू इंस्टॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ऑफ 1.3 million kiloliters per annum। अगर हम एशियन पेंट्स जो कि इंडस्ट्री लीडर है फ्रॉम सिंस 1967, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें तो इट इज़ अराउंड 1.7 million kiloliters per annum। तो आप देखिए ये स्केल है ग्रासिम का इन द एंट्री। एंड ऑल्सो ये भी बात है कि जो आदित्य बिरला वाइट सीमेंट का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, द कंपनी कैन लेवरेज दैट
and to use to promote its paint business in India. तो काफ़ी अच्छा इनका distribution network है, because Aditya Birla, the Birla White Cement is one of the leading brands of white cement and putty distribution companies in India. तो ये ग्रासिम की बहुत एडवांटेज है टू एंटर इनटू दी पेंट इंडस्ट्री, बिकॉज 75% ऑफ द इंडियन डेकोरेटिव पेंट्स इज ऑर्गेनाइज्ड. उसमें अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स का 55 to 60% मार्केट शेयर है. सो ग्रासिम कैन एम फॉर दिस रिमेनिंग 25, क्योंकि ऑलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर है हमारे पेंट इंडस्ट्री का. तो अगर ये 25% ग्रासिम के होल्ड पे आ जाता है तो इंडस्ट्री पेंट मार्जिन्स विल definitely be affected that way. Regional players, small players तो definitely adversely affect होंगे, but even Asian paints will feel the brunt, because overall जो margins है उस पे effect आ जाएगा. ऑल्सो जो इंडस्ट्री बैरियर्स है, एंट्री बैरियर्स है इस इंडस्ट्री में, वो काफ़ी हाई है. बट गिवन द ग्रासिम्स बिजनेस एक्यूमेन एंड द बैकिंग ऑफ लीडिंग बिजनेस house, also existing distribution capacities, this company can be a big threat to the Asian Paints existing market share in India. तो बाकी अगर हम देखें तो दूसरे जो कंपनीज है, JK Paints is also revamping its manufacturing capacities in India. तो ये जो changing industry dynamics है उससे Asian Paints पे बहुत इफेक्ट आ सकता है. अगर हम बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो ऑलरेडी आफ्टर दिस अनाउंसमेंट बाय ग्रासिम, ग्रासिम की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम इन टू एग्जिस्टेंस इन द 4th quarter of 2024. सो वी हैव 1 year टू सी हाउ इट गोज. तो बाकी अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो एशियन पेंट्स सॉ अ ह्यूज स्टॉक करेक्शन आफ्टर दिस अनाउंसमेंट बाय ग्रासिम, एंड इन्वेस्टर्स टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू पनिश द स्टॉक, आई वुड से, बिकॉज उसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई थी. तो इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी करेक्शन भी आया है स्टॉक परफॉर्मेंस में, क्योंकि अगर हम देखें स्टॉक परफॉर्मेंस, आप देख सकते हैं कि जो अराउंड it came down to around 17% अगर हम स्टॉक रिटर्न्स देखें इन द लास्ट 3 years. लेकिन बाकी अगर आप देखें तो लास्ट 10 years में it had grown to 20%. Asian Paints is a market darling of investors and has been giving consistently good returns in double digits year after year. लेकिन over the years the stock returns have been diminishing. So in the last 10 years it was around 20%, which has come down to 17% in the last 3 years. अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, डबल डिजिट ग्रोथ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स. 3 years पे 15% था सेल्स ग्रोथ, और 10 years में 12% था. Similarly, profit growth was also 12% in the last 10 years CAGR. अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड 269,000 crores, which is about 5 times higher than what its other competitors are, the next in lines. अगर हम बात करें बर्जर पेंट्स की, तो बर्जर पेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इट इज़ अराउंड 0.7 million kiloliters per annum, और कांसाई नेरोलैक का है 0.6 million kiloliters per annum, when compared to Asian Paints 1.7 million kiloliters per annum, which is slated to again increase to over 2 million kiloliters per annum. But we should not forget about the Grasim's entry in this regard. बाकी अगर हम बात करें करंट जो ट्रेडिंग प्राइस है एशियन पेंट्स की, it is around 2,800 rupees, which is just 20% shy of its high price. And after the news, markets are consensus analyst estimate is that the prices will go to around 3,050 rupees in the next 12 months. तो ये हमारी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, और अभी हमारे जो प्राइसेस है वो अराउंड 2,800 है. तो आप देखिए ज़्यादा जंप का इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है. बाकी द कंपनी इज़ अ शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी. इसकी डिविडेंड पे आउट रेशियो हैज़ बीन 40%. प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्टेबल रही है, अराउंड 52% ओवर द ईयर्स. तो उस तरह से कंपनी ने काफ़ी हैज़ performed well over the year. It is also almost debt free. ROE ROCE भी काफ़ी impressive है. ROE is around 25%, ROCE is in the
30% रेंज, एंड इट हैज़ मेंटेन्ड इट ओवर द ईयर्स. सो ये सारे अगर हम देखें तो ये हमने बात की है कंपनी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स की. सो नाउ द कंपनी, अगर हम बात करें कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाई विथ हाई liquidity is also available to the company, लेकिन company is planning in 8700 capex over the years. तो वो बात आप ध्यान में रखें. जो कंपनी इज ऑलमोस्ट लाइक डेट फ्री, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ये इसकी केपेक्स प्लान्स है आगे कंपनी का, वो इसके फ्री कैश फ्लोज पे एक it can bring a pause to the free cash flow. It can have an effect on the free cash flow. तो वो एक कंपनी का पॉइंट है. तो ये सब हमने बात की है एशियन पेंट्स के बारे में. अब अगर हम देखें तो कंपनी के, आपने देखा, बिकॉज द कंपनी हैड बीन अ शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी ओवर द ईयर्स एंड ऑल्सो अ डार्लिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंट गुड रिटर्न्स ओवर द ईयर्स. ऑल्सो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इंडस्ट्री लीडिंग कंपनी है. इट हैड अ ओलिगोपोलिस्टिक इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें मार्केट लीडिंग कंपनी एशियन पेंट्स होती है. तो और अगर हम देखें पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में पीपल हैव ऑल्सो वांटेड टू ब्यूटिफाई देयर होम्स एंड प्लेसेस, हाउ दे वर्क, हाउ दे स्टे. तो ये सब ट्रेंड्स एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है. कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है, वो मेजर कंपनी का इट विल वर्क इन फेवर टू consolidate its industry position in India. But हमको Grasim के बारे में नहीं भूलना चाहिए. If Grasim succeeds to grab a higher market share in the country, then the overall operating margin of Asian Paints will also be affected. इंडस्ट्री का तो होगा एंड एशियन पेंट्स होल्ड्स अ ह्यूज पोर्शन, सो उस पर भी इफेक्ट आएगा. तो ये सब था हमारा बाय analysis on Asian Paints. I hope you like the video. I will urge all my viewers to please share the videos with others because I am also new to the platform. Please show me some love. So please like the video, subscribe to my channel, and also share it with others. I hope to see you again. Have a nice day. Bye.